नमस्कार दोस्तों, इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। वीकली क्विज 31 से 6 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द circumstances in which a government will run a budget deficit? Tax revenues are less than the sum of the government spending component of real GDP and transfer payments. The accumulation of budget shortfalls over time. Tax revenues are more than the sum of the government spending component of real GDP and transfer payments when a government engages in a contractionary fiscal policy. तो दोस्तों देखो, क्या होता है बजट डेफिसिट किसे कहते हैं? बजट डेफिसिट तब कहते हैं जब कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, रेवेन्यू आपका कम है। ठीक है, सो टैक्स रेवेन्यूज आर लेस देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, so that is the circumstance. Correct answer is A. Which of the following are the advantages of appropriate use of scientific technologies and practices, that is in agriculture? It allows more quantum of production to get monetized. It helps to mitigate inflationary pressures for the end consumer. So दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अप्रोप्रिएट यूज की अगर हम एडवांटेजेस देखें तो दोनों के दोनों बिल्कुल यहाँ पे सही होंगे। एंड साथ ही साथ इट ऑल्सो रिड्यूसेस इनपुट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, ताकि मतलब इनकम भी बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन? ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? डिमिनिशिंग सरफेस वाटर, डिक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट इन द वाटर एक्वाइफर नियर ओशन, लैंड सब्सिडेंस। तो दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी दोनों बिल्कुल सही होंगे। सरफेस वाटर्स तो बिल्कुल अफेक्ट होते हैं, वाटर टेबल फॉल होता है तो इन वेरियस वेटलैंड्स फॉर इंस्टेंस द वाटर टेबल इज एसेंशियली एट और स्लाइटली अबव द ग्राउंड सरफेस एंड ड्रॉपिंग वाटर टेबल्स रिजल्ट इन वेटलैंड्स ड्राइंग अप। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बाकी थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर विल बी बी। Which of the following is true regarding the global distribution of biodiversity? Biodiversity is the greatest closest to the equator and lessens as you move towards the north and south poles. Areas at high elevations contain greater biodiversity than area at low elevation. As temperature decreases, biodiversity level increases. All of the above. देखो, climate near the equator. Okay, climate near the equator is warm year around. And it also supports many species, so the biodiversity is rich. But as one moves further from the equator, the presence of seasons causes more temperate regions to have less biodiversity. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। करेक्ट आंसर इज ए। Question number 5, a free trade agreement is one which eliminates tariff, import quotas and preferences on most goods and services traded between the two countries. It is the first stage of economic integration of countries. So देखिए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ओके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का पहला स्टेज होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। With reference to नल से जल योजना, दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज अ सेपरेट स्कीम and it has no link with Jal Jeevan Mission. The water committees comprising villagers will decide what they will pay for the water they consume. तो देखो, नल से जल योजना जल जीवन मिशन का ही कंपोनेंट है, सो नो लिंक, टोटली फॉल्स होगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इज बी। With reference to cartelization, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है। Cartelization undermines overall economic efficiency and innovation. Competition Commission of India is responsible for restricting cartelization. दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही। ठीक है, CCI बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है एंड अकॉर्डिंग टू CCI cartel includes an association of producers, sellers, distributors, traders, etc. करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे C. Taxes work as an automatic stabilizer. Which of the following explains the role of taxes most appropriately? Tax revenues automatically increase as GDP falls, which prevents consumption and real GDP from falling further. They automatically decrease as GDP falls. An automatic decrease in tax revenues causes government spending to decrease, which prevents real GDP from falling further. Correct answer होगा इसका भी। देखो, जब real GDP गिरती है, इनकम गिरती है। ठीक है, जब इनकम गिरती है, टैक्सेस भी गिरेंगे। इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, जो कि कंजम्पशन को बढ़ाएगी।
ठीक है, सो डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ऑफसेट सम ऑफ द इंपैक्ट ऑफ अ रिसेशन। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। With reference to cage aquaculture, only fishes are grown in this process. This type of aquaculture reduces water pollution as well as eutrophication. Correct answer होगा इसका A। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। केज एक्वाकल्चर में बेसिकली it leads to accumulation of excreta. It leads to water pollution as well as eutrophication. So reduce नहीं करता। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत। Which of the following are the examples of controlled environment agriculture? Crop diversification, aquaculture, vertical farming. करेक्ट आंसर होगा इसका सी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन गलत है, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे टोटली फॉल्स होगा। The aim of this controlled environment agriculture is to provide protection from the outdoor elements and maintain optimal growing conditions throughout the development of the crop. Question number 11. Which of the following can be regarded as the negative effect of climate change on the ecosystem? Consistent lower than average winter snowfall in a mountain ecosystem causing a decrease in water supply to rivers later in the year, impacting the survival of some populations. And traveling in a marine ecosystem removes large quantities of fish and destroys corals, decreasing the amount of available food and habitat resources. So देखो, trawling disrupts an ecosystem through over exploitation of resources as well as habitat loss. ये तो इसमें तो कोई दो राय की बात है, that is absolutely false. बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट नहीं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मतलब ट्रॉलिंग जो है वो वेदर पैटर्न की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मतलब वेदर पैटर्न की वजह से जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपको क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इफेक्ट दर्शा रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट नहीं। ध्यान से सॉल्व करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। Which of the following can be the reasons for the high economic cost of rice and wheat to the FCI? High issue prices, higher population coverage under the National Food Security Act. So guys, हाई इशू प्राइसेस तो गलत होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। देखो, एक होता है CIP, आपने सुना होगा, सेंट्रल इशू प्राइस। So it is the price at which the government makes available food grains for beneficiaries of the NFSA and other welfare schemes. Now, observing that the food subsidy is becoming unmanageably large, the economic survey has recommended the revision of CIP, and food subsidy is ballooning as a result of high economic cost. रीजन इज लो इशू प्राइस, नॉट हाई इशू प्राइस। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। विद रेफरेंस टू लोक अदालत आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं, इनकरेक्ट आपको बताना है। सो ये डायरेक्शंस का भी आपको ध्यान रखना है। There is no court fee payable when a matter is filed in the Lok Adalat. The award made by Lok Adalat is final and binding on all parties, and no appeal against such an award lies before any court of law. If the parties are not satisfied with the award of the Lok Adalat, they are free to initiate litigation by approaching the court of appropriate jurisdiction. So incorrect कोई सा नहीं, ठीक है। नालसा आपने सुना होगा, along with other legal service institutions conducts लोक अदालत। लोक अदालत is one of the alternative dispute redressal mechanism. No court fee available, final decision होता है, सारे स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। Question number 14. With reference to freedom of religion in India, Article 25 is available to both citizen as well as citizen of any foreign nation currently in India. The rights stated under Article 25 are subject to public order, morality, health, and also to other provisions which are related to fundamental rights. So दोस्तों यहाँ पे दोनों statements हैं, ठीक है। There are certain restrictions, there are certain limitations when it comes to fundamental rights. तो Article 25 जो है वो citizens को भी प्राप्त होते हैं as well as foreigners को। With reference to Ramsar sites and wetlands, Indian government's definition of wetland does not include river channels and paddy fields, and every Ramsar site is a notified protected area under the WPA 1972. Second statement गलत है, सारे के सारे रामसर साइट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। करेक्ट आंसर इज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। सो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।